guys, this is an unboxing of the OnePlus 9RT phone that was launched just a couple of weeks back. So inside the box आपको of course मिलेगा ये फ़ोन जिसके ऊपर एक प्लास्टिक की पैकेजिंग है, एक फ़ोन का कवर जिसमें एक ग्लॉसी इनसाइड है बट अ मैट आउटसाइड, और बॉक्स में आपको मिलेगा एक चार्जर एंड ऑफ कोर्स अ चार्जिंग केबल. ये है 65 वॉट वॉप चार्जर जो कि है एक फास्ट चार्जिंग. And what else do you have inside the box? Well, you've got a paper sleeve that contains some instruction manual. So let's see. The OnePlus 9RT, it's got a 3-camera panel on top left of the phone. There's a slight OnePlus branding here, very little. और इसका जो बैक है वो बहुत ही ग्लॉसी फिनिश में नहीं है, मैट फिनिश पे, एंड इट फील्स वेरी लग्जूरियस, वेरी स्मूथ टू होल्ड. यहाँ पे आपका साइलेंट का और रिंग का बटन है. यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका लॉक करने का भी बटन है. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फोन आपके वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन्स हैं, और नीचे आपका स्पीकर है, चार्जिंग केबल का पोर्ट है, और ये है आपका सिम कार्ड पोर्ट. लेट्स सी, यहाँ पे भी आपका एक स्पीकर मिलेगा. ये आपका फ्रंट कैमरा है. So basically this is the display panel that you get. It's a 6.6 inches panel, slightly bigger than the 9R, and it's an AMOLED panel. जो refresh rate है, which is a very great thing with the OnePlus 9R, that the refresh rate is 120 Hz. इसके ऊपर एक Corning Gorilla Glass भी है for scratch protection. Also, so this phone is powered by the Snapdragon 888 SoC, which puts it at par with other expensive ones. The 9R, as far as storage is concerned, it's got two variants. It's got this massive 4500 mAh of battery with 65 watt fast charging जो मैंने आपको दिखाया था, with Wi-Fi 6 stereo speakers with Dolby Atmos, which basically will give you a theater-like surround sound. So that's indeed great. Then there are 3 other colors available in this. I have the Hacker Black, there is Nano Silver and Blue as well. However, so you have a primary 50 megapixel camera, which is bigger than the one on 9R. Ultra wide is again 16 megapixels. Macro cam is 2 megapixels, and then you've got a selfie cutout camera in front, which is 16 megapixels. Now let me show you some of the pictures that we clicked.